के अगेंस्ट में। हाँ, कौन पूछ रहा था? अरे कोई एक पूछ रहा था ना, मार्क। सर मैं यस पूछ रहा था, सर। मैं समय पूछ रहा था। तुम अगर बोलोगे तो मैं पूछ रहा था, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? अभी वो ऑनलाइन मोड पे चल रहा है, आपको फिजिकली देख रहा हूँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ हम देख पाएंगे। आप नाम बताओ। सही है फिर। हम शेयर स्क्रीन कर लिए हैं, मतलब आपको नहीं देख पा रहे हैं सब। सर मैं देख पा रहा हूँ, मेरा मार्क बंद कर दीजिए। यशवीर पाल क्या? यस सर, देख ओ, ले। आवाज से तो हम पहचान लिए। 10 से 7 आप धन्यवाद। स्कोर किए हो क्विज में। मगर सर आप ठीक। 10 से 10 शायद स्कोर कर लिए हो सरप्राइज में। तो मैं भी सरप्राइज्ड था कि कैसे आप इतना रख लिए। सरप्राइज में सर, सरप्राइज आंसर दिया हूँ इसलिए 10-10 हो गया। सर 10 है। 10 है, देखे तो। यस सर। और किसको चाहिए? रवि तेजा पूछ रहा था, ये रवि तेजा। सर मेरा अटेंड नहीं हो पाया था। वो ताबिश। यस सर। ताबिश तुम तो नहीं दिए थे वो सरप्राइज। आप देखते हैं कितने यस स्कोर सर। किए। हम उसको अपडेट कर लेंगे। सर मेरा नाम बोलो जो सब क्विज दिए थे। सर सुनो। मेरा फोन ऑफ हो गया था। नहीं नहीं, सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ, जो क्विज दिए थे सरप्राइज नहीं दे पाए थे नेटवर्क इशू के चलते। जी आपका सर। मार्क कोई सरप्राइज में हम्म, प्रोपोर्शनली होगा टू क्विज। ठीक है, आप ओके सर। क्विज में जितने स्कोर किए हो उसी हिसाब से दिया जाएगा। तो आप बोलो क्विज जो अटेंड किए थे, नेटवर्क के चलते सरप्राइज सबमिट नहीं कर पाए थे टाइम के अंदर। यस सर। हाँ, उनका नाम बताओ। सर ताबिश। ताबिश दिए थे तुम क्विज? नो सर, मैंने नहीं दे पाया था सर। कुछ दोनों नहीं दिए थे तो आपका नहीं। एक सर हम दिए थे। बोले जो क्विज दिया था, क्या नाम तुम्हारा नाम है बताओ। एस रवि तेजा। इधर। ओ चलो। ग्राम में ठीक है। चार्जिंग। अगले बार कोई सरप्राइज क्विज टेस्ट टू में ओके सर, मिलेंगे उसके फिर। पर्पज में फिर बोलिएगा। बताओ और किसका। और किसका बताओ रे। सब सर ज्वाइन शिवा। कर लिए हो तो? सर थर्टी शिवा। सेवन सर 48। 37 मत बोलो नाम। नाम प्रीतिरंजन। बताओ, नाम बताओ। प्रीतिरंजन जेना। हाँ हाँ है। प्रीति रंजन जना आप दिए थे क्या? क्विज दिए थे, सरप्राइज नहीं था नहीं कि? दोनों दिया था। अरे तुम अभी सुन पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं या नहीं? हाँ। हम बोले कि देखो, आप यहाँ से देखो। आपका 43 स्टूडेंट अटेंडेड क्विज टेस्ट। ठीक है। ऐसे। और सरप्राइज टेस्ट 36 सबमिटेड। वो कैसे होगा? वो 15 मिनट के अंदर तो शिफ्ट हुआ, एग्जाम हुआ था ना। हाँ। यानी कि जो क्विज दिया था वो सरप्राइज देना चाहिए। हाँ। मेरा आवाज पहुंच रहा है तो? हाँ। यस सर, यस सर। तो मेरा कहने का अभी ये है कि जो क्विज दिए थे सरप्राइज जो नहीं दिए थे, यस सर। सबमिट नहीं कर पाए, तो इसीलिए आप एक ये दूसरे टैब में आपका कॉलेज का CMS, कॉलेज का यूजर आईडी पासवर्ड दे देना है आपको। ठीक है। यस सर। तो CMS में आप जाके BME का सब्जेक्ट का मार्क अभी सब अपडेटेड हो गया। आप उसको देख लेना। शायद आपका क्विज में हुआ है, सरप्राइज में नहीं हुआ है। यानी कि आपका सबमिशन नहीं हुआ था, समझे? ऐसे। तो वही वाला जो केस है वो सब आप मुझे टेक्स्ट कर लेना पर्सनली। ठीक है। यस सर, यस। हम उसको क्विज के प्रोपोर्शनेट उसको अपडेट कर लेंगे सरप्राइज में, समझे? ठीक है सर। चलो, मगर जो क्विज नहीं दिया है सरप्राइज, क्विज अभी दिए थे? अटेंडेड, सरप्राइज नहीं दिए थे। नहीं। रुको देखते हैं। शिवानंद कुंवर आपका था। ओ सॉरी, ये वाला थोड़ा डीप हो रहा है। इसको हम अपडेट कर लेंगे, समझे?
और किसका? मेरा सर संतोष कुमार। हाँ हाँ, संतोष कुमार। संतोष कुमार किधर है? संतोष कुमार, तुम क्विज दिए थे? यस सर। हाँ, चलो, मिला। और किसने? और किसका? बताओ रे। स्वर्णिला मल्लिक। यस सर। बोलो। सर वो मैं लास्ट दिन लैब में नहीं जा पाई थी तो उसका मार्क्स मेरा 0 आया है सीएमएस में। और तो क्या वो आएगा क्या? बताओ, आप तो लैब में नहीं थी। अब हाँ जिस दिन तो हम वो लास्ट बार जो आपका जो कोविड के चलते जिस दिन से बंद हुआ है, उसके पहले वाला लैब आप वो मिस हुआ था। हाँ वो सैटरडे आप, का लैब। हाँ, आपका मिस हुई थी, तो इसी के चलते क्या हुआ कि आप पिछले का भी भाई नहीं दिए थे, तो जितने में थी आपका मार्क अपडेट हो गई है। जो नहीं थी उसमें मार्क अपडेट नहीं हुआ। समझे? ठीक है सर। तो होप कि आगे 15 दिन 20 दिन के अंदर अगर कॉलेज खुल जाएगा तो होगा, नहीं तो आप बाद में रिमाइंड करना, वो एवरेज मार्क कुछ मिलेगा आपको। ठीक है? ठीक है सर। और किसका है क्या देखो? आज आप लोगों का दिशा प्रोग्राम है क्या? नहीं सर वो तो अभी तक हुआ नहीं है। वो आनंद हाउस और बेहरा हाउस में हुआ है। ना आपका कालम हाउस का आप लोगों का आज है सर। आज सर कितने बजे? तुम लोगों को तो मेल गया होगा ना। आप लोगों का कालम हाउस ना 21 तारीख मेल तो नहीं वो आया होगा है कि तो। तो इसमें क्या नहीं आया है। होता है दिशा में? दिशा में क्या होता है? जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट होता है, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लेसमेंट सेल। ठीक। 10 से 11:45 तक आपको दिशा प्रोग्राम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। समझे? यस सर। आप देखो, यस सर। वो शेयर किया गया है ना। अरे आप हेलो स्क्रीन सर। देख। मेल में आया हाँ, हुआ। आया है ना। यस ब्रो सर। मनी। यस सर। यस सर। आज तो 21 तारीख है, यानी कि आपका 11:30 से 2 आज तो काला हाउस है। देखो, ये प्रोग्राम क्या होती है? वो एक्चुअली ये प्रोग्राम जो होता है कॉलेज का, जो आपका ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है? इसमें आपको आपके यहाँ दोस्त लोगों से बात कर लो, जो बेहरा हाउस में साकी हाउस का हो गया है जैसे आपको। इसमें आपको यहाँ पर देखो, आपको प्लेसमेंट के बारे में और इंडस्ट्री, जो प्लेसमेंट में इंडस्ट्री अभी क्या आपसे चाह रहा है, यानी कि आप आज स्टूडेंट जब ज्वाइन कर रहे हो आपसे क्या उम्मीद रख रहा है इंडस्ट्री। और उसको प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा दिया जाएगा, कैसे आपको सब प्रोग्राम करना है जिसके चलते आपका प्लेसमेंट ड्राइव इजीली हो सकता है। ठीक है? और इंटर्नशिप के बारे में बताया जाएगा, व्हाट इज इंटर्नशिप। आपका ये रोड मैप टू इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल कैरियर। टेक्निकल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू और कैरियर काउंसलिंग का सब इम्पोर्टेंस क्या है आपके अभी 4 साल के कैरियर में। ठीक है? समझ रहे हो या नहीं? सर तो ज्वाइन दिस इज सर मैं रिसीव नहीं। ओके ओके। आई थिंक इट तो विल बी सर कम्युनिकेटेड। 11:30 से शुरू हो जाएगा? हाँ, 2 तक। सर सर और सर सर भेज दिया उसका क्लास बीच में के जो लिए। क्लास है वो बंद रहेगा? वो आपका अभी 11 बजे आपको जो फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको मैसेज कर लेंगे। ठीक है? यस सर। यस तो सर। उसके बारे में आप चिंता मत करो। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। चलो हम डिस्कस करते हैं। हमारा और थोड़ा कुछ पार्ट बच गया था इधर से, जो आपका हम डिस्कस कर रहे थे।
आपका रोबोटिक्स, ठीक है। रोबोटिक्स का जस्ट वेट तो आप हमारा क्या चला। हाँ, रोबोटिक्स, इंट्रोडक्शन टू रोबोट एप्लीकेशन ओवर। हाँ, क्या बोल रहे थे? ऑफलाइन, इट विल डिपेंड ऑन द 3 बजे। इंस्टीट्यूट कर ली। यस हाँ, सर। क्या आया था? सर वो फॉरवर्ड कर दे रहे हैं आपको सर। नहीं, आप उसको शेयर कर लो, स्क्रीन देख लेंगे सब। हमको फॉरवर्ड करने से क्या होगा, हम तो अपीयर करने वाले नहीं हैं। आपके पास है तो यस सर। आप शेयर करो स्क्रीन। सर से नोटिस टा हमर नालंदा इंस्टीट्यूट रो। ओ, नालंदा इंस्टीट्यूट। दैट मे बी actually, whether it is offline or online, it will depend on the situation, COVID situation. Okay, if it improves, then there is a high chance that can be conducted examination in offline mode. Okay, and if this situation persists for another 2 to 3 months, there is a high also more possibility of online. So depending upon the COVID situation, you have to appear either online or offline. But though you are in the very first semester and you have not any prior experience of handling this transition phase, that means whether you are getting confused whether it is online or offline. So we have to prepare for both now at least, because in the same time the part it is which has already been covered from the subject, go through that MCQ type question and prepared accordingly. Okay. अरे उसको नीचे लाओ जो स्क्रीन दिख रहा है, हाँ उसको नीचे लाओ। हाँ, क्या लिख रहा है? इट इज हियर बाय टू इन्फॉर्म दैट द सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी इन ऑफलाइन मोड डिसाइडेड बाय 30th academic council meeting on 9th January 22 academic calendar एंड यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी है वो? ऊपर में कुछ है क्या? सर ये फेक इन्फॉर्मेशन है। फेक है। सर रेफरेंस नहीं सर। नंबर लिखा है कि एनआईटी बोली सेटा। एनआईटी, चलो यस सर। कुछ। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। नहीं आया है कुछ। हाँ, आप बोल रहे को कल आया है। 。 . 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 .. .. .. . . हाँ, आप बोल रहे को कल आया है।
नोटिस में देते हैं। नहीं नहीं आया है। So what you are showing now, I think it is not related to computing. Clear? Okay, sir. Okay. So we have discussed in this chapter introduction to robotics. We have defined robotics, defined three rules in robotics, or that is called as robotics law given by Isaac Asimov. We also considered what is robotic system and robot anatomy. Okay, what are the main parts like your controller, drive unit, joint, link, arm, end effector, wrist. Okay, everything is over. So various component like your base of the robot, manipulator arm, okay, end effector or gripper. End effector, it is called that end effector if it hold a part, if it hold a tool, it is called your gripper. Wrist having three possible orientation like roll, pitch and yaw. Drive and actuator, next important component of robot is that drive and actuator actually which causes the manipulator arm to move or end effector to move in space. Next one is the controller, is having hardware and software supports for giving commands to the drives. Another one is sensor, and it is the most integral part of this robot, without which actually we will not able to operate that robot. This sensor gives a feedback or the information for subsequent actions of the robotic arm. And without receiving the information, this robotic arm will not move. So it is, you can call this is very important part of or component of the robot. So this robotic link is the rigid component and it is joined together. Suppose one other link will become and connect with it connected through joint. And once joint takes place between two robotic link, then there is a relative motion will begins. These are the representation of different types of joint already over. Linear joint, orthogonal joint, rotational joint, twisting joint, and revolving joint. End effector, already discussed what is end effector. And end effector, if it is used to grasp the object or to hold the object, it is called your gripper. And if it is having some specific task to perform, it is called your tool. Okay, so that when robot end effector is a device attached to the wrist of a manipulator for the purpose of holding materials. Okay, that means it can hold the material, parts or tools. Okay, basically it holds to perform some specific tasks. Gripper and effector are of two types. One is gripper, another is tool. End effector grasps or hold the object, and a tool is having some specific tasks. It is specifically designed like your spray gun, spot welding electrode. Okay, so these are the, you can call this end effector as a tool. End effector is attached to the wrist. Okay, and three possible orientation already discussed. What is roll, pitch, and yaw? It is very important from your examination point of view. Roll is the rotational motion. That means rotate, you have to rotate it clockwise, anti-clockwise. Pitch is the up and down movement of the wrist. That means it can move up and down like your hand. Okay. And yaw is the right and left movement of the wrist. So one movement is your up and down, one is left and right, and another is rotation. So up and down movement is move positive x, positive y, positive, negative y. That is called your pitch. And yaw is called your left movement, okay, of the wrist.
and roll is also called swivel or rotation of your hand. Like similarly, that arm also rotate. We also discussed what is degree of freedom. Okay, minimum number of independent parameters or custom completely. So for a spatial manipulator, 6 degree of freedom is required. For a planar, it is 3 degree of freedom. And after that, we also discussed what is redundant and under-actuated manipulator. If either a spatial manipulator with more than 6 degree of freedom, it is called redundant. Less than, it is called under-actuated. So in what cases more than 6 degrees of freedom required, I will show you in the next slide. Okay. So these are the things already discussed, and I just recall this one. So these are the robot configuration. 5 types of robotics configurations we have already discussed. One is Cartesian. Yes, Virpal. Yes, sir. Can I explain what is Cartesian coordinate robot? So the robots which mainly in XY plane. They only act in XY plane. No. Any other? Oman? Vikas? सर हम 2-3 क्लास नहीं थे सर। PM? Prem Piansu? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो जब क्वेश्चन पूछ रहा हूं तब तो कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। तेजा सिंह, तुम एक्सप्लेन करो व्हाट इज योर कार्टेशियन रोबोट। Sir, in Cartesian robot, it moves in X, Y, and Z plane linearly. That means in Cartesian coordinate robot, this is comes under your robot configuration. In Cartesian coordinate robot, the movement of the arm is linear in 3 different axes, like your X, Y, Z, positive X, negative X, positive Y, negative Y, and positive Z, negative Z. You can see it from the diagram. Yes or no? Having Yes, only sir. sliding and prismatic joints. So those who have missed, you can also capture these things. And this robot is rigid and accurate. Rigid, but gives accurate result. And where it is used, suitable for pick and place type of operation. Example is your IBM RS1, Sigma robot, all these different kinds of robot already shown you in the previous class through one extra PPT. This is cylindrical, 2 linear and 1 rotary movement. Similarly, in your spherical, your 1 linear, 2 rotary movement is there. Unimet robot is one type of a spherical robot, coordinate robot or polar coordinate robot we can call. It is having good static performance but poor dynamic performance. Can pick of object lying on the floor. But what was the major disadvantage of a cylindrical robot is that it cannot reach the object lying on the floor. Okay. So Bostron 600 is one type of pure cylindrical coordinate robot. These are the examples. Revolute coordinate or your articulated coordinate robot, it is called. Your rotary movement about 3 axes, 3 independent axes. Suitable for handling parts, components in manufacturing industry. Rigid and accuracy enough. So Puma robot T is one example of. So we are space of the manipulator. Okay, or what is workspace of a robot.
जैसे हम पढ़े कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रोबोट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोबोट, तो वो जितना वॉल्यूम का स्पेस में काम कर सकता है, जितना आपका वॉल्यूम टोटल तो आने की पूरा एरिया के ऊपर काम नहीं कर सकता है, उसका जितना मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप कार्टेशियन रोबोट को आप फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर, वो एक्स एक्सिस में कुछ दूरी तक जा सकता है, नेगेटिव एक्स में भी कुछ दूरी तक जा सकता है, ये हो गया एक साइड। वाई में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में, इसी तरह जेड में। सो अगर उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो गया तो यानी कि इट विल फॉर्म ए वॉल्यूम। So beyond that area, or sorry, beyond that space, this robotic arm cannot move. Okay. So that volume of space is called your workspace of the robot. समझे या नहीं रे? रे समझे या नहीं? जितने वॉल्यूम के अंदर वो आपका रोबोट आर्म मूव कर सकता है, उसी वॉल्यूम को बोलते हैं वर्क स्पेस। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके आगे सपोज हम है कि रोबोट रखे, वो अगर सपोज एक क्यूब का शेप, जैसे सपोज साइड 1 फीट तक लो, उतना तक काम कर सकता है। उसके आगे वाला एरिया को बोलते हैं डेक्स्ट्रोस वर्क स्पेस, यानी कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेस जहां तक वो पहुंच सकता है, ठीक है। एंड इफेक्टर रीच विथ वेरियस ओरिएंटेशन, ओके। And what is reachable workspace? It is the volume of space that end effector can reach with one orientation. Okay. So this is all about your workspace types. Then come to the resolution, accuracy, and repeatability of a robot. This is the simple question. Sometimes it comes directly in your semester examination. Define accuracy and repeatability of a robot. So what is that resolution? It is defined as the smallest allowable position increment of a robot. Accuracy is defined as the precision with which a computed point can be reached. And again, suppose that we have to reach to a point. Suppose you place a robot there. If to that particular point your robotic arm can reach, then it is called your robot showing the accuracy. Okay, that means what is the targeted point where to reach that robotic arm able to reach. Okay. So it is the precision with which your computed point can be reached. Okay. And what is the repeatability? You define the precision with which a robot reposition itself to a previous point. So these are the example. These are the important point from this one. Next, where we can use robot already discussed in the last class. Okay. In a manufacturing unit, you can use robot. Okay. So performing arc welding, spot welding, spray painting, pick and place operation. In drilling, milling also it is nowadays it is used. Okay. In this area in manufacturing industry, it can work. Okay. Suppose you have a question that suppose, sir, in this manufacturing industry also human is there to do all sorts type of things. But still, what is that advantage of using robot in manufacturing industry? That it can work in a hazardous and dirty environment and can increase productivity. Okay, it can increase productivity for maintaining improved quality. If you use the robot, your direct labor cost will be reduced. Your repetitive tasks can be handled more efficiently. Okay. So this is the advantage of using robot in manufacturing industry. With certain area, robot works. Another is the medical application. You are also surgery. No, sir, I don't know.
आदित्य, प्रीतम, what? So those people who lost their arms or legs in accident or Very good, very good. These are called your prosthetic devices. Clear? artificial parts. Very good. Artificial parts. Okay. So because of some road accident or anything, or suppose from the born, if anyone having is disabled. Okay. Some parts of the body is disabled, or in the from the earlier life one part is not there, so we can use these devices. Or Okay. in military. What? So in army also. No? In army we are In the using war. also. Where? In army, so in a war, some people lost their legs and arms. So Have you life attended the changing. previous class? Yes, sir. Already shown you in army where we use the robot for the demining. Okay. No, sir, I'm telling the prosthetic device. Oh, prosthetic device you are telling. Okay. Yes, sir. Yes. There also we can use. They actually send this one as a their strategic. Okay. So if they place a prosthetic device in front of, so opposition can know that there is a one man is moving. So these are the strategical move. Okay. Okay, sir. And in underwater application, for what purpose these robots are used? To explore various resources. Suppose आपके पानी के अंदर, suppose देखो, जैसे कोई देखो अभी जो रिसेंट हुआ है टोंगो पे जो वोल्केनो इरप्शन हुआ है, आप सुने हो तो? यस सर। यस सर। अब वहां पर जो वोल्केनो इरप्शन हुआ है, यानी कि वो वहां का सब पूरा एटमॉस्फेयर से लेके वाटर सब अभी पोल्यूटेड हो गया है। तो उधर जो अभी कैसा सिचुएशन है वो सब स्टडी करने के लिए हम भी भेज सकते हैं ये वाला रोबोट। समझ रहे हो या नहीं? Yes, sir. समझे या नहीं रे? देखो अभी जैसे कि हमारे तो अभी कुछ दिन पहले अगर जो देखो एयर क्रैश हो रहा है, उसका कुछ पार्ट्स अगर बीच समंदर में गिर जाता है, उसका जो ये होता है उसको भी सर्च ऑपरेशन के लिए भी वो आपको भेजा जाता है, जो सब डिवाइसेस। समझ रहे हो या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आप सब टोंगो का वोल्केनो इरप्शन सुन रहे हो या नहीं? आप स्टडी आईक्यू वाला वीडियो देखो, उसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगा। वो अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। नहीं सब करंट अफेयर्स के साथ भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहो, पता चलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वेयर इट इज यूज्ड इन टू एक्सप्लोर वेरियस रिसोर्सेस अंडर वाटर, वहां पर भी उसका इंस्पेक्शन रिपेयर के लिए भी आप रोबोट यूज कर सकते हो। तो स्पेस में किधर आप इस ये पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पिछले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो जरूरी है। ठीक है, नहीं तो ये वाला आपको मैं शेयर कर लूंगा, समझे? Yes, फॉर sir. कैरिंग आउट ऑन ऑर्बिट सर्विस, जैसे कि हम जैसे भी देखे थे जो नासा ने भी resources are there in the Mars planet or not? Yes or no? अभी अभी आप अभी के सुन रहे हो कि अभी जो अभी यूएस में चल रहा है कि कुछ उसका जो 5G इम्प्लीमेंट कर लिया है, उसके चलते आपका जो बैंडविड्थ से वो सप्लाई दे रहा है सिग्नल, उसके चलते भी आपका कुछ फ्लाइट बंद हो गया है। सुने हो या नहीं? यस सर, यस सर। Yes, sir. हाँ। और किधर यूज होता है स्पेस एप्लीकेशन में आपका? फॉर कैरिंग आउट ऑन ऑर्बिट सर्विसेज, असेंबली जॉब, इंटरप्लानेटरी मिशन, स्पेस क्राफ्ट डिप्लॉयमेंट। ओके, जैसे कि आपका नासा अभी यूज कर रहा है। हाँ ट्रांसपोर्ट फॉर एस्ट्रोनॉट्स टू वेरियस लोकेशन, फ्री फ्लाइंग रोबोट, प्लानेटरी एंड एक्सप्लोरेशन रोवर्स। एक्सप्लोरेशन रोवर्स जो
हम दिखाए थे पिछले क्लास में स्लाइड से, आप उसको थोड़ा रिकॉल कर लो। इन एग्रीकल्चर वेयर इट इज यूज्ड रोबोट इज यूज्ड फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, ओके, फॉर स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स इन लिक्विड फॉर्म, से बोथ आर ऑफ सेम। क्लीनिंग वीड्स, सोइंग विद सीड्स, क्लीनिंग वीड्स से समझ रहे हो या नहीं? यस सर। एंड सोइंग सीड्स, अभी जो जैसे अभी देखो एक ऐसा कुछ मशीन आ गया है कि वो भी सीड्स को सोइंग कर रहा है, उसका कोई प्लांट को इंस्ट्रक्ट करना है, तो इसीलिए भी आप रोबोट यूज कर सकते हो। सो हाउ यू कैन स्पेसिफाई ए रोबोट, so like how you can specify a force, like your to define or specify a force, what are the parameters essential, like your magnitude, direction, though like it is similarly for to specify a robot, you have to know at least what type of control system it is using, what type of drive system, what coordinate system, okay. Oh, what is the teaching and programming method we are using, what is the accuracy, repeatability and resolution of that one, what is its payload capacity. Each robot cannot, every robot cannot lift a 100 kg of things, okay. Suppose one is designed to take out 10 kg, another is 50, another is 100, like that. So from that point of view also you can specify a robot on its application. Suppose one robot is designed to work in underwater, can you use in space? No. So this way also you can specify a robot that this particular robot is designed for suitable operation. Are you hearing or not? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. So, okay, what is the range and speed of the arm and wrist? Okay, in what area it can work, or that is called your workspace. At what speed it can work? Okay, that is also specify a robot. What type of sensor is used? Whether they are using infrared sensor, what is their, whether they are using optical encoder, or what is, whether they are using your proximity sensor. So based on that one also, you can specify a robot. And another is the end effector and gripper. So all these are the essential parts without which we cannot define a robot, okay, or specify a robot. Hence all these are called your specification of a robot. So this is all about this chapter, and we are at the end of this robot chapter. I will share the PPT with you. You please update in your notes. Okay. So in the next Yes, class, sir. we will discuss what is that power transmission devices from model 3. That includes your belt drive, rope drive, gear drive. Okay. So before coming to the next class, at least you go through whatever the source you are having available, whether it is through phone, Google, or if you are having any book, what is belt, what is gear, what are the types of gear. Please come with that, preparing that one. Okay. Okay, Okay, sir. sir. Yes, sir. Just wait. I am taking your attendance. के चलते नहीं दे पाते, आप वो अपना नंबर टेक्स्ट कर सकते हो मुझे। दिए थे, सरप्राइज नहीं दिए थे, तो आप कैसे देखना है, आप CMS में उसको यूजर आईडी पासवर्ड दे के, जैसे मैं अपना का दे रहा हूँ, आप उसी तरह तुम्हारा दे के देख सकते हो BME में आपका कितना मार्क दिया गया है। बताओ रे
देखो कौन कौन है बोलो। मंडल, तुपो, राजा, सोरेन, ऑरेन सोरेन। यस प्रेजेंट सर। ओके। अभिनंदन दास, आदर्श, प्रेजेंट सर। आदित्य, यस सर। आलोक, आलोक कुमार है देखो। नहीं सर, आलोक नहीं है। नहीं सर। अमन आनंद,